आवाज थोड़ी ज़्यादा ही हो गई. Hi everyone, good afternoon. I think it's a good afternoon already. So this is very interesting session, primarily focusing on the tier 2 cities and primarily for Jaipur, because Jaipur is coming in the tier 2 cities. That why Jaipur is important in term for the technological point of view. So we will start with a small introduction, and then we will go deep in this session, right? So let me start from my side. So I'm Munish Jadon, I'm CEO of ZNet Technologies. I have started my company from Jaipur itself, almost in 2001. And so far we have started as a hosting company, then cloud solution provider, and now we are the product company, primarily focusing on the cloud space. Right. So this is about me. I will request Parijat ji to provide his introduction. Hi guys, good to see you. So I'm Parijat Agrawal. I'm an alumnus of IIT Delhi, and I'm the co-founder for MetaCube Software. So we started in 2003 timeframes, and it's almost like 20 plus years now since we've been in Jaipur ecosystem. And it's good to meet all of you and talk about Jaipur as an emerging tech hub in this session. Hello everyone. I'm C. Anil Agrawal. I'm Managing Director for NAV India, which is legally called as Back Office IT Solutions Private Limited. So I started this company in 2001. And we mainly work for hedge fund accounting and related softwares. So we are one of the top 10 hedge fund administrators in the world. And right now more than 2,600 people are working in our company. Thank you. Thank you, Anil sir. Hello everyone, good afternoon. I am Alok Sharma, and I'm co-founder and CEO of Mark9 Technology Solutions. We started in 2016, and we focus on products as well as IT consulting and tech solutions. So, yeah, thank you. Hello? Yeah. So I think देखो थोड़ा इसको कनेक्टिंग बनाते हैं सेशन को. आपके सामने जो बैठे हैं ना, so they are big guys, ठीक है? वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन they are leader in their space, right? So let's go deep dive in the session now. So Parijat ji, tell me one thing, that for the tier 2 cities especially, what are the main elements which is very important for building a tech hub? So any special important points? Absolutely, Munish ji. And again, like he has set the tone, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, because हमारे audience राजस्थान के हैं, they understand Hindi very well. So सबसे important for the tech industry to stand is the talent. You know, you can live without the capital, which is the investment which is coming in, but talent is very important, and good talent. Second, in that talent there has to be the learning attitude. तो राजस्थान में शुरू से ये रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं है कि जो काम let's say our parents did, हम लोग वही काम पिकअप करते हैं. हमें हमेशा से एजुकेशन को यूज़ करके आगे जाने की एक चाह रहती है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिटी के टेक्नोलॉजी हब बनने में, कि जिसको कहते हैं ना नवचार करना या नई चीज़ों को लाना, you know, trying out new things and not being afraid about failure. And I think that spirit which is there in the
Rajasthan, that is which is there in Jaipur. In all of you, I think that is what is laying the foundation of Jaipur being a technology hub, and hopefully in future Jaipur will become much, much, much bigger than where we are today. Yeah. Thank you, Parijat ji. Anil ji, why this is important to focus on the tier 2 cities or tier 2 hub? So as we all read every day, tier 1 cities, big cities like Mumbai or Bangalore or Hyderabad, they are saturating from infrastructure point of view. Their travel time, commute time has increased so much. Their cost of real estate and rental and lease rates are increased very much. So big companies are focusing on tier 2 cities, and talent is available everywhere in India, but in these tier 1 cities, most of the migrated talents from different part of the countries are working, and it's a win-win situation if they get good opportunity nearby their home. So tier 2 cities are becoming more preferable choice for big corporates and big IT companies these days. Thank you, Anil ji. Alok ji, you want to add something? मेरा मानना है कि जयपुर इज tier 2 city though, but from the standpoint of the living cost and the parallel developments which have been fostered into this are very great. और उसमें राजस्थान का अगर मैं जयपुर मेन सिटी की बात करूं तो पायनियर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड टेक एंटरप्रेन्योर attractions में across all, not only tech. So I believe government policies and a lot of the incubation accelerator and the investors and those all things have started as a legacy here. If I talk about the startups point of view and getting more and more entrepreneurs here. So 360-degree ecosystem support है यहाँ पर, and then it is Rajasthan hub of I would say education, especially the professional courses. So talent यहाँ पे जैसा कि परिजा सर ने बताया कि is one of the major things. So it is really supporting. Thank you, Alok ji. Very interesting. एक point और ऐड करना चाहता हूँ, please. sorry. So because I think why regional hubs? So India has a huge population, right? And jobs are very important. Everybody cannot just go and live in NCR or Bangalore or Chennai or wherever the tech hubs are. So it's important that all over India there is growth, and not just in like few pockets, right? And hence emergence of tier 2, tier 3 cities is very, very important. So basically getting growth to the people where they are, and IT industry can do that. If you talk about steel, if you talk about any, let's say, auto hub, auto industry, or maybe, let's say, textile industry, a lot of these industries are limited by what are the raw materials which are available, what are the capital structures that are there, and many other things. But IT can be in any city, right? And hence, development of tier 2 and tier 3 cities is very, very important so that we can get employment to people in these cities where they live, where they've been brought up, and they can grow there. Yeah, it's very interesting, Parijat ji. People are coming back to tier 2 cities because of the good life and also for the opportunities, because government is also focusing more on the tier 2 cities now. So let's go back to the history now. So Parijat ji, you are basically like, the history about Jaipur very well, and especially for the tech street. So ये जयपुर कैसे बना, ये टेक हब, तो इसका थोड़ा हिस्ट्री आप बताइए, और क्या अचीवमेंट रहे हैं जयपुर के जो इसको टेक हब बनाते हैं. So पहले मैं शुरू में बोल देना चाहता हूँ कि इस हिस्ट्री में अगर कुछ पात्र या कुछ कैरेक्टर्स मुझसे रह जाएं
तो उसको इग्नोर करा जाए, बिकॉज जयपुर के अभी तक बनने में बहुत सारे पात्रों का हाथ है आईटी इंडस्ट्री में. सो एट एनी रेट लेट मी स्टार्ट. सो I was in US from 94, and it's not that 95 also I tried to come back to Jaipur. There were no jobs available here in 1995. IT sector, no jobs in Jaipur, only in Bangalore or Chennai. So I went to US. 2002, again I came back to India, to Jaipur particularly, let's go figure out, let's do something there. And everybody who I spoke to was saying here, why are you going to Jaipur? Go to Bangalore, go to Chennai. By the way, guys, at that time, Hyderabad and Pune were also not very big hubs. NCR, Noida was. I mean, I know a lot of you may be born at that time, so, you know, I'm talking of slightly old time. So back in 2002-3 time frames, there were few people in Jaipur ecosystem, who were struggling, who were trying to bring IT industry here. Luckily, we had a STPI, Software Technology Parks of India Authority here. And very luckily and very, our RICO, which is our Government of Rajasthan organization, did recognize IT as a sector, and they started giving lands to the IT companies. So, few of the characters at that time, Mr. Ajay Data, Keshav, who's my partner, we have Puneet Mittal, we have Rajesh Mundra, and we had several others, and I'm sorry if I missed out any of these people. So all these guys were trying to provide services from Jaipur. And now a lot of them, at that time, if you know, a lot of digitization also started in government. So some companies started focusing on government. The rest of the companies were very export-oriented, export-focused. And because we could not compete with the services company from Bangalore or Chennai, we started focusing on niche areas such as, outsourced product development. So Pratham did that. Metacube, which is our company, we did that. Some of the companies did that. Time passes by, comes 2007-8. And by that time, again, I think Salesforce was one of the technologies which came into our ecosystem. I'm proud to say Metacube was the company which brought Salesforce to Jaipur. And, and by the way, at that time we had other companies such as Girnar, which then, their founders decided that, we won't focus on services, we'll focus on product development. So they started Car Dekho. Of course, you see their founders now in Shark Tank and wherever. And there were some of these people who said, we will not take the services path, we will take the product path, right? We also have a lot of tax software companies from Jaipur. I don't know how many of you guys know. So in tax sector, and I was speaking to Rajiv Gupta ji, who will also be joining us soon, I think he was mentioning somewhere around 15% of tax forms which are filed through the organized sector. And I would imagine 50 to 60% of those tax filings across India, whether it is GST, income tax, etc., it's filed through softwares which are built in Jaipur. So all these things were happening. Of course, Anil Agarwal ji who's sitting here, NAV back office had started in Jaipur. So anyhow, our progress kept on happening. 2011, 2012, a lot of college students from very good colleges started coming out in the Jaipur ecosystem. So talent started becoming available. And, after that, Razorpay, Dealshare, many other startups actually also came out of Jaipur. And luckily, we had many other things also coming in. And then COVID pandemic is something which really opened up everybody's eyes. So during those days, most of the big companies, their employees also started working from Jaipur. Suddenly said, oh wow, people can work from Jaipur as well. We thought that they can only work from NCR or they can only work from Bangalore or whatever. Oh, Jaipur also exists. Oh, these other cities also exist. And suddenly in everybody's strategy, Jaipur became big. And sorry, I missed out Mahindra SEZ. I'm surely going to miss many things. Mahindra SEZ started in 2008 and Genpact, which basically came in 2000, I think 3-4 times frames to Jaipur. Again, these were very important because when we went and met the clients, we could say, oh, GE is in Jaipur. Oh, MetLife is in Jaipur. Oh, Deutsche Bank is in Jaipur. Right? Otherwise, why are you going to Jaipur? Right? So anyhow, we have come far
from where we were in 2002. We have a number of innovative companies in Jaipur now, and we have a lot of employment in IT. Now, that's where we are. I hope, I'm not taking away all the time, but Jaipur's history is long, and I'm sure I've missed many characters and many people in that. Colleges, and, of course, the entrepreneurs and, everybody who has contributed to getting Jaipur to the stage it is against all odds. Yeah. जयपुर में एक्सप्लेन करने में टाइम लगता ही है बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ यूनिक थिंग्स आलोक जी इन टर्म्स ऑफ टेक what is special or what is unique in terms of tech in Jaipur which makes Jaipur as an important part of the world and the emerging technologies and the special technology which is available or a special talent which is available in Jaipur. So, as a tech in Jaipur, number one, as I said earlier also, and we mentioned that point all in this, that Jaipur is having a good talent. So, we are a talent factory where we are retaining the talent of the state in home. And most of the people, if they have choice, then they would try to retain in Jaipur or in Rajasthan itself, given a chance. And I guess state has been showing a good success into that. So number one in tech retention is this. Second is, as I know, and Paridas sir mentioned also, Salesforce was one of the very starting companies who pioneered this particular starting of the Salesforce here, and slowly Jaipur has become the hub of Salesforce. There are a lot of global companies who started in Mahindra World City and also in STPI Park, Jaipur chapter. So this is another thing where we were attracting a lot of talent in Jaipur itself. The third part is DigiFest, tech shows, a lot of government initiatives, and also NASSCOM is also pumping so many efforts here to spread out the tech awareness and a lot of grants from the government side in terms of agri-tech. This is one of the sectors. E-commerce, because I remember when we started, we were struggling that which particular industry we should focus on. So we found out there are a lot of good e-commerce companies who are making absolutely good over here. In our research, we got to know that e-commerce is one of the biggest sectors which has been given sort of good proof points in terms of taking grants from the government, and also maximum startup in this particular sector. So, and we know that if something is coming online, then it is retaining tech. Without technology, this particular industry cannot survive. And so many things are required here. And similarly, fintech is another sector where government is supporting, and the private investors, accelerator, and a lot of the seed funders are over here. So we have been a legacy of mindset in Jaipur or Rajasthan. And I know many people who are from this land, and they have given so many success name, and now they are coming back to make this particular state successful in the technology field. So I cannot mention all such things, but I guess these are the points which are making this a very successful. Thank you. Thank you. From the Thank tech you, point Alex. of view. So we are calling Jaipur as a AI, Salesforce and cloud hub now already. So let's come to the infrastructure part. So Anil ji, this is for you. That why Jaipur infrastructure is important and how we are improving as an infrastructure, and any special infrastructure project which is coming and which will help to the tech industry. So Jaipur has a lot of plus points from infrastructure point of view. फर्स्ट स्टेट कैपिटल है, तो स्टेट कैपिटल ऑलवेज स्टेट में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है.
The second point is it's very close to Delhi and NCR. These days, 3 hours drive, and there are a lot of other connectivities. Airport hai, jisse India ke har parts connected, and a lot of international flights are also there. And it's a peaceful city. Crime rate बहुत कम है. Infrastructure cost is comparatively low than the metro cities, and all good quality of life available, good quality of education available. So all are the plus point which needed for IT industry are available in Jaipur. So Jaipur is flourishing. A lot of engineering colleges are there. So every year, around 1 lakh graduates pass from different colleges and different streams from Jaipur. So talent is available in lot. So whatever needed for IT industry is available here. So it's a good for future for IT industry in Jaipur. Thank you, Anilji. Since it's a heritage city, मनीष जी एक पॉइंट और है हाँ जी, इसमें please. इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट से जो शायद मैं मिस कर गया सो data center is another area which is a very lucrative field, and Jaipur is becoming the choice for the tech companies to set up their data centers in Jaipur, be it any startup or the early birds in this field or established companies. So I have few tips with me, like about the Accenture is one of the things where they are working with one of the largest telecom companies. So they had such kind of plans, and apart from that, HPE. So we are the consulting partners and also the OEM partners with HPE, where they also have a big plans to set up their data center in Jaipur with the help of partnership, or they have their own setup plans as well. But first they are preferring for the partnership if someone is doing that. So this is another area point. Thank you. And the reason for coming these big brand for data center is earthquake resistance है Jaipur. So Jaipur is the place जिसमें natural disaster की possibility बहुत कम है, किसी भी तरह के natural disaster की. So that is another plus point. and this is very important because I am in touch with 2 or 3 large data centers who want to set up their infrastructure in Jaipur. So this is very important and interesting. In terms of government support, Parija ji, how the government rules and government support is helping the data centers or tech companies in Jaipur, and how they are helping them to grow? So I'll add to both the points, infrastructure as well. So firstly, Jaipur has had very good flight connectivity, road connectivity now, like 2.5 hours from Delhi. That is number one, and it has always been on the tourism map. So everybody worldwide, if you talk about, they know about Jaipur. Golden Triangle of Rajasthan, Agra, Jaipur, Delhi is known to everybody. So many of people have already visited Jaipur, right? That brings in familiarity. Second, if you talk about NCR, which is our closest competitor, because that's where we lose most of our employees to, life is very difficult. You have to commute every day 2 hours, 2.5 hours from Noida to Gurgaon or Gurgaon to Delhi or whatever the case may be. In Jaipur, till now, that situation has not been there. At the most, the commute has been 20, 30, 40 minutes. And now, of course, so in that sense, Jaipur offers a better quality of life to any of the employees. And that's a function of infrastructure. Then if you talk about schools for kids or, colleges for basically kids as they, grow. Again, I'm trying to address all the things which any family of, husband and wife would be focusing on while making a choice of where do they want to work and where do they want to live. So in all those cases, Jaipur comes out with high flying marks, right? And we have great colleges too.
what government and rules, which can help us or which are already helping us. See, I think, one thing which I want to bring up is, affordability is very important. Affordability of land is very important. I was very surprised to learn recently that in some cases the land and the rentals have gone up as much as Navi Mumbai, right, in Jaipur. I mean, that if you take away, Rajasthan has ample land, right? Why can't we spread out the development? So the government has to, government is obviously coming out with policies to develop, cities and, I think making cities which basically combine both living and working, just like Gurgaon is there, right? So you have living and working happening in a certain hub, or, a Singapore development model or whatever it is called. Those kinds of things are very important, and of course safety. So our government is of course providing a number of different things. I believe Anilji was mentioning to us yesterday that they are providing us discount on electricity, on PF, on ESI, and all sorts of policies which government of Rajasthan is providing help to the companies. And of course, we are sitting in the Techno Hub. We are sitting in this lovely convention center. All these are facilities which are being provided by our government, for reasonable things. I think all these infrastructures, if you may, will definitely help, right education policy, right safety for women. Women are a very, very, very important component of the IT industry. When you're sitting behind a keyboard, so let's say you're working on a site and you have a hammer. Of course, their physical strength matters, right? Because men may have more physical strength. But when you're sitting behind a keyboard, women are equally or more powerful than men many times, because your strength doesn't matter, it's your brain which matters. So I think safety for women, right, that is something, again, which is something which, this is all part of infrastructure. Security, transportation, everything is part of infrastructure. Absolutely, yes, which is very, very, very important. So let's come to the startups now, which is very interesting subject. Alok, if you can give us some of the notable startups which is emerged from Jaipur, and from Jaipur, especially from Rajasthan also, because startup is a very dynamic ecosystem, and how they emerged and how the culture is there within the city towards the startup ecosystem. Yeah. There are few startups which we have already heard on this platform. I remember one of the very initial startups is Cardeco. We have Rapido, Razorpay, Voila, and there are many startups which have grown from Jaipur itself, and it has been fostered, I would say, as a tradition now in this land. So these are the startups. In fact, so Anil Sir and Praja's organizations are pretty old, but if I talk about from that perspective legacy, then these are also very great successful startups. So BetaQ and Neo Back Office Solutions. And I should say that in last 6 years, we as a Marktine also made a good growth in terms of the AI solutions that we have provided. And then there are various organizations who are really giving good success and the employment to the industry and trying to retain this thing. Now the frameworks and the infrastructure. So again, we are talking about same things, but when we talk about the startup ecosystem in Rajasthan is a very strong from the policy perspective, policy development perspective, and continuously there are new things has been added every year.
and every session whenever there is any kind of amendment and budget comes. So if I remember, then in 2020-22, the grants for the startup based on their curate category has been doubled. Initially it was 10 lakh, then it has made as 25 lakhs. And there has been exemptions in the tax reimbursements that has been given by government, and especially for the agri-tech organizations, where this has been provided to them at a very inspirational level, so that they can come up and the entrepreneurship can become very great. Another thing is women entrepreneurship and tech entrepreneurship has also been focused and given a lot of weightage. So initially in 2016 and 17, there were only 2% women entrepreneurs. Now this has become somewhere around 6.5% women entrepreneurs. It is not just because there was not earlier the women entrepreneur, but now they have been given exposure in terms of if they have 51% they are holding in partnership in an organization, then they would be given more support in terms of their funding and the support system financially. So this is another way that government only has started. And then of course the quality lifestyle over here, living cost, all such things are also making this particular city and adjacent to, or I would say very near to the NCR. Right? So we have accessibility of so many things which are important from the quality of life perspective. These all factors are making that we are having tech growing here, and a lot of grants that have been given from 360-degree angle, private and government sector and investment point of view. Yeah, I just want to add few more points. So for startups like STPI is supporting very much. They have incubation center in Sitapura, Jaipur and Jodhpur, and Rajasthan government is also very supportive for startups. They have Bhamasha Techno Hub close to this place very. So the environment is very positive for startups here. Startups, so like I said, everybody doesn't have to be working in services firms. I think startups is the need of the hour. See, last year, recruitment by services firms has not been that high in the colleges. Actually, it's been negative, right? So startups are very, very important. And, I want to mention TIE Rajasthan, the Indus Entrepreneurs Rajasthan. That's a very big group. And so, for example, we are running right now a contest in all the colleges called TIE-U, where the first, anybody who basically qualifies and, of course, wins the first prize may get funding of as much as $500,000, which is a lot of money, right? And Jaipur has the right ecosystem. So from the colleges, a lot of startups, a lot of young students like yourselves, they're working and building, they're coming up with ideas, they're applying for that. Right? Of course, all of you have heard about Razor Pays and Car Dekhos and, a number of, by the way, Unacademy, they also started from Jaipur. Of course, they became very big. Their founders were in Jaipur initially. That's where they incubated their idea and then they went ahead. Now, if you talk about the systems of structures, which I believe my fellow panelists have already touched upon, I think Jaipur does have seed. So if you go from the capital structures point of view, there is, seed funding, which is angel funding, which is available. You have RAIN, you have iStart, you have, a number of different angel investing organizations who keep on visiting Jaipur at regular intervals. There are mentors who are available for startups. You need a mentor. You may come up with a great idea, but you need a good mentor
to take that idea, to the next level, working with people who have already done that. Then, of course, you have the government policies. You have space which is available. You have iStart. You have, you have STPI again has an incubation center, as Anilji mentioned. And so you have pretty much everything available. You have great talent available. A lot of students who make into IITs and IITs have done their coaching in Kota, right? And for them, Rajasthan, Jaipur holds a special place in their heart, and they want to come back to Jaipur and work here, right? So you have all the things available, and we have to have many, many more startups than what we have right now. Because yes, it's a brave new world, but only that's how you will generate employment in various cities, right? Because if you expect that some big company will come and give you employment, that may or may not happen. Definitely, Parijat ji, Alok ji, Anil ji, you have given very good insights. In fact, the ecosystem, which is TIE, NASCOM, incubation centers, they are helping startups to grow. And apart from that, there are some good startups are also available, which they started in Jaipur, but they moved to somewhere else. So ये numbers काफी है, वो अभी गिनते नहीं हम लोग. But this is good. Actually, someone has to start. Whether they will stay in Rajasthan or they want to go somewhere else, it's their choice. But they have to start somewhere. So let's come to the point of talent pool and skill development, which is always a discussion topic in all the forums. What are the strategies we are employing in Jaipur for acquiring the talent, developing the talent, and retention the talent? So, Parijat ji or Anil ji, any one of you? So, as I said earlier, Jaipur has a lot of engineering college, and now it is becoming a coaching hub also. After Kota, Jaipur is becoming a second biggest coaching hub in Rajasthan or maybe in India, and government is promoting that by developing a specialized area for that named as coaching hub, which is the first of its kind in India. So talent pool availability is not at all a problem in Jaipur. All kind of talent available, whether you need engineers or accounting finance related. We hire mostly accounting finance related people like chartered accountants. So Jaipur is one of the biggest producer of chartered accountants in the country. And then a lot of other professional accounting courses and talent is available like company secretaries or CMAs or BCom, MCom, all type of talent available in Jaipur. So hiring of those talent is never a problem, and we hire them and train them as per our international clients' need. And then when they get good work environment, good salary and good life, so they continue to work for a long time, and by providing best practices and best work culture, we are able to retain most of them for a long time. About the hiring engineers and their retention, Parijat will explain better. Sure, Anilji. So talent, like I said, talent is the cornerstone of IT industry. And so let's start. So when we walked in, I think the organizer mentioned to us कि भाई आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करिएगा, एक लैंग्वेज नहीं यूज़ करिएगा. तो देखिए सबसे पहले तो ज़रूरत है जयपुर में जो हमारी जो टैलेंट निकल रही है कि वो the communication skill has to improve quite a lot. So I think there is definitely a gap I see in terms of communication training.
right? Some sort of like a finishing school or something which is needed. While we focus on engineering, while we focus on everything else, but teaching communication to people, how do you formulate your thoughts? How do you present to other people? How do you take it to the next level? I think that is very important. As far as the technical technical talent goes, yes, we have good raw talent, right? Once you take in the talent, then you have to work with them to kind of finesse the area. So whether it is databases, data structures, algorithms, those are the basics. A lot of you students, हम में से कई सारे लोगों का ये होता है कि यार ये लैंग्वेज सीख लेते हैं, सेल्सफोर्स सीख लेते हैं, जावा सीख लेते हैं, चलो पाइथन सीख लेते हैं, चलो एआई की कुछ टूल सीख लेते हैं. But that is not good enough. You have to start from the fundamentals. What are fundamentals? Object-oriented programming, data structures. भाई अगर वो आपको आता होगा तो आप किसी भी तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन्हें समझ सकते हैं. वरना आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूजर्स बन जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट. अच्छा, प्लस आई थिंक जो भी कंपनीज हों, स्टार्टअप्स हों, उनका एक माइंडसेट होना चाहिए कि इट्स नॉट कि भाई हम ओनर्स हैं, कोई एम्प्लॉई है. वी आर ऑल ह्यूमन कैपिटल. वी आर ऑल कलीग्स एंड ह्यूमंस हु आर वर्किंग टुगेदर. So it's very important that you treat your colleagues as a part of some, knowledge discourse. आप continuously learning कर रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं इस दौरान, right? हम लोग at least हमारे, a lot of companies in Jaipur are, founded by ex-Metacube people. And if you ask them, they'll say, अरे यार हमने सब कुछ वहाँ सीखा था. बहुत कुछ, ऑफ कोर्स फिर उसके बाद उन्होंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है, बट वी हैव ट्राइड टू मेंटेन सॉर्ट ऑफ अ कॉलेज कैंपस एनवायरनमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप टैलेंट को कंटिन्यूसली ग्रूम करें. आप ये सोचे कि नहीं मेरे को तो ऐसा बंदा मिलेगा तभी मैं उसको रखूंगा, उसको हायर करूंगा, वो नहीं हो पाएगा. वो आपको कभी नहीं मिलेगा. आपको हमेशा थोड़ा 19 ही मिलेगा, फिर उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा. सो टैलेंट की ग्रूमिंग जरूरी है. एंड अच्छा, बाय द वे, आईटी इज वन सेक्टर. आईटी इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड नॉलेज इंडस्ट्री, राइट? बट नॉलेज इंडस्ट्री के लिए देन यू हैव टू कंटिन्यूअसली एनहांस योर नॉलेज. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि भाई मेरे को एक स्किल आ गई अब तो मेरी चलती रहेगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर 5-6 साल में, 8-10 साल में स्किल सारी बदल जाती है, राइट? सो वो एक कंटिन्यूस लर्निंग का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का माइंडसेट हम सबको रखना जरूरी है अगर हमें अच्छा टैलेंट पूल डेवलप करना है, अच्छी स्किल्स डेवलप करनी है. एंड ऑफ कोर्स नए एरियाज में जाना है, उनमें एक्सपेरिमेंटेशन करना है. बिना एक्सपेरिमेंटेशन करे हाउ विल यू लर्न साइंस? हम लोग फिजिक्स हमने जब पढ़ी थी, हम लोग पहले जाके लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे. तो एक्सपेरिमेंटेशन भी जरूरी है, R&D भी जरूरी है, लर्निंग भी जरूरी है. तब जाके यहाँ पे आपको अच्छी टैलेंट मिलेगी. और अच्छी टैलेंट, that has to be the biggest focus area for most of the companies and most of the colleges, of course, as well. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोग कुछ स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हों. तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिनमें वो लोग आपको mentorship point of view से, in fact, NASSCOM is also providing a similar thing. If someone is already into startup ecosystem, then NASSCOM's की तरफ से भी आपको mentorship होगी, which is helping you to enhance your talent and your skills. And there are a lot of incubation centers as well. So incubation centers in private colleges are also running. They are inviting external companies for the talent enhancement and skill development point of view. And government is also providing these kind of facilities to give you knowledge services and innovation support from the skill development perspective. So you guys can read that out also. And also one more thing, for any organization, there should be a budget that you should take out for the internal tech development point of certifications. For example, AWS, Azure, and Salesforce. So these organizations are providing certifications. So you guys can look at those things also if you want to train your force
and you want to develop their skills better. So ये बजट हमेशा अपनी टीम को टैलेंट को एनहांस करने के लिए आपको रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को. जस्ट क्विक टिप. Right, and these cloud companies are investing heavily on the skill building. So I think this is very important. Yes, future skills prime. So NASSCOM has their own skill initiative, which is future skills prime. So you can access all the courses, most of the courses, free of cost. Also, you can get good certifications provided by NASSCOM and the relevant provider, and most of them are free of cost. So I think you should definitely explore the Future Skills Prime from NASSCOM. I think you should go and register on the NASSCOM Future Skills Prime. Yes. This thing. And this is free of cost. Most of the courses are free of cost. Yeah. Yeah. Third important perspective is research. So how Jaipur is ready, if you go to European market or US, you know that the research is happening in the cities where business is not happening in much way. So how Jaipur is ready for the professional or for the scholars who want to do research only. They don't want to go into the commercial market as a product developer or as a service-oriented company. Those who want to come up as a researcher. So how Jaipur is ready to take that as third pillar of growing as a IT hub. So I think सबसे पहले तो इसको कन्वर्सेशन में लाना चाहिए, जैसे कि अपन अभी ला रहे हैं कि भी R&D का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कंपनी के लिए. अगर आप एग्जांपल लें, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ सिक्योर मीटर्स फ्रॉम उदयपुर, राइट, और आई बिलीव देयर आर अ फ्यू अदर मीटर मेकर्स इन राजस्थान. आई थिंक दे आर द लीडिंग यूटिलिटी मीटर मेकर्स इन द वर्ल्ड, राइट. उनके पास जो मीटर्स हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, वेदर इट इज जर्मनी, वेदर इट इज स्वीडन, वहां तक उनके मीटर्स लग रहे हैं बिकॉज इनके R&D डिविजन्स हैं सारे के सारे, राइट. तो सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट, आई थिंक एक तो जो सारी अ लॉट ऑफ रिसर्च हैपेंस इन अकेडमिया, इन कॉलेजेस, राइट. सो इफ even if your company can tie up with one university very closely and work with academia there, where you have students like yourself who want to pursue PhD in certain areas, or there are interesting problems where you have to come up with solutions, I think that is the place to start with, right? Because that's where people have research as a motive, not money as a motive. Of course, money can come as a result of the research, but that is not the primary motive, right? Whereas when you are in a commercial or an industrial setup, our focus is, let's make money out of it. Then research suffers. But I think to your point, yes, product development, great. Services, great. But R&D is something with the change in technologies which is happening right now, EVs around you, AI around you, ML around you, a lot of jobs will be disappearing. And new jobs will be appearing as well. I'm not saying there is only disappearance of things. So R&D investment, making that as a cornerstone of your company is very important. Does it help to some extent? Thank you. If anyone has very special question, they may ask, or we can conclude. This offline, which one? Online courses. Available online. Online. Future Skills Prime, you can search. And it is free. It's a free. It is, you can register and you can take certification from there. Government of India is paying a lot of money. Thank you, Chairman. I'm H. Kumar from CST Energy Access in the field of environment and renewable energy for sustainable development goal. पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज को भी धन्यवाद दूंगा और चेयरमैन को भी धन्यवाद दूंगा. बहुत ही अच्छी बात की कि आपका स्ट्रक्चर है, जहाँ जिस कैंपस में बैठे हैं वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर है. दिल्ली के अंदर जो द्वारका के अंदर जो हब बना, मतलब एग्जीबिशन बना, उससे भी अच्छा हब है ये. यहाँ आपके पास टेक्नो पार्क, टेक्नो हब है, आपका डाटा सेंटर है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, सीपैट है,
सीतापुर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का, प्राइवेट नहीं है, और करोड़ों अरबों रुपए का स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। क्वेश्चन है कि इसको कन्वर्जेंस में कैसे चेंज करें। तो इसमें 3 मेरे क्वेश्चन है। आपने नास्कॉम की बताया, नास्कॉम इज ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो कि अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सेमीकंडक्टर काम करती है। इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, एसएमई स्टार्टअप भी है, और सो मेनी स्कीम्स भी हैं। जो गुड़गांव में भी सेंटर बना, मैंने खुद ने जाके देखा। क्वेश्चन है कि जो कन्वर्जेंस की बात है कि राजस्थान में कैसे हैं, उसमें मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला तो यह है कि राजस्थान के अंदर सेमीकंडक्टर पॉलिसी नहीं है, तो एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 बननी चाहिए, जिससे कि जितनी भी सेमीकंडक्टर अलायंस हैं, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चर हो, एसकेडी सिस्टम हो, स्क्रूड्राइविंग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, सबको कंपनीज की एक पॉलिसी बननी चाहिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा यह है कि मैं सोलर टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं लाइफ मेंबर भी सोलर एनर्जी सोसाइटी का। आई एम लिंक विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस 192 कंट्रीज। क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक द सोलर एनर्जी एक्सेसिबल इन राजस्थान। हजारों किलोमीटर यहां रोड बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल स्कीम भी लॉन्च कर दी है आपके सामने, Very good. प्रधानमंत्री घर योजना। क्यों ने एक नई पॉलिसी राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया जाए, जो इंडिया की पहली पॉलिसी, और रोड टॉप स्कीम। जितना रोड पड़ा, रोड पे आप ईवी चार्जिंग बनाइए, ईवी स्टेशन बनाइए, चार्जिंग से नो पेट्रोल नो डीजल, इको सिस्टम बनाएगा। राजस्थान बिकम टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द इकोसिस्टम मैनेजमेंट। बहुत ही इनके बढ़िया पॉइंट्स हैं। तो आई वाज रीडिंग सम स्टैटिस्टिक्स ऑन सोलर। सो राजस्थान कैन जनरेट इनफ सोलर पावर टू सप्लाई होल ऑफ इंडिया, right? Such is the potential of Rajasthan, right? And that is clean energy. Everybody is wanting to go towards clean energy. So, and Rajasthan has all these potentials. So, yes, our to your questions, basically, the first one, NASCOM has to engage more in Rajasthan. We have been doing much more. Munesh ji is now the NASCOM chair. Earlier, I was the chair. Now, I'm part of the NASCOM SME National Council. And I think we have to work very closely with the state and the colleges to ensure that Rajasthan comes much more to the foray of everything. Semiconductor policy, see, I'm not so clued in on that. Yes, it's a very, very important aspect. But of course, we are very close to the Pakistan border, and that always plays a very important role in case of Rajasthan. Semiconductor, most of these things are, I believe, in Bangalore and other areas. These are being set up. Again, I'm not very clear about it, where it is being set up. Gift City is also setting up semiconductors. So, world's largest. So I think, yeah, so more such initiatives in Rajasthan are definitely needed to ensure that unique areas, whether it is, green power, okay, green power, ESG, which is basically for everybody, it's about equity, social and governance, right? We do work in these areas, by the way. This is like, for example, we have a company called Gravitas in Rajasthan, which is like doing very, very well. They are into recycling of batteries, and there are a few other companies. So ESG is an emerging domain, right? And Rajasthan can play a very important role in it. Whether it is solar power, whether it is, waste disposal, whether it is whatever. And then again, I believe all the new age things, probably we are ripe for, I don't know, maybe silicon manufacturing and similar technologies, but this is all very, very high end. And I think my panelists have mentioned that data centers, that's big. I think Rajasthan will become one of the largest places for data center. But then, to my surprise, one thing which Muneshji I want to mention on this data centers point, so most of the backbones in Rajasthan, they run along NH8, Tonk Road and all that. Now what about the other roads? You can't establish a data center in Mahindra's age because they don't have the right backbone running. Why can't we expand that? Why can't the government promote that? If you want to, you have land, but only there are arteries where you have, we are doing development, and there the land prices are phenomenal, right? How do you expect to
spend 1 lakh or 80,000 rupees per square meter to buy land and then establish a data center on that? You tell me. Right? So a lot of these things have to be done. There are, systemic things which the government should look at the fundamental level, and then work with the industry and the various bodies to spread out the development rather than do it in only certain areas, which we are doing right now. हाँ. Very nice, very nice. In fact, जैसे skilling India, energizing India, very well said, sir. Very well said. So innovate and elevate. ये हमारी इस बार NASSCOM की theme है. Innovate and elevate. Basically, आप innovation तो must ही है. ये लीजिए. From the solar energy point of view, very good point, first of all. So, I believe, I don't know about other states, but in this state for the commercial projects, उन सब में आपको mandatorily एक solar plant होना ही है. I have 2-3 in my family, these kind of commercial projects and all, the large scale projects, where this has been mandatorily enforced from the government and especially from the environment department and all. So yes, इस चीज को बहुत प्रमोट किया जा रहा है. Secondly, कुछ एक चीजें हैं जो कि earlier in domestic we used to get better subsidy, but now this subsidy is not at that level. That should again be at an earlier level. ये government की तरफ से बिल्कुल होना चाहिए. And the rates have also been increased because the panels and all. Some Make in India panels, even they are now costing a very high cost level, which have been imported from other countries. So वो थोड़ा सा hindrance देते हैं, right? So इसमें ये थोड़ा सा बाकी, if you see that net metering and all, so this net metering policies have been improved. So कुछ जगह थोड़ा सा improve किया है, but at the same time initial the kick जिसे मिलती है हमें, वहाँ पे थोड़ा government के इस initiatives को better करना चाहिए पहले की तरह. Started very well, then down, and the post implementation of this solar facility things have been eased out. So मुझे लगता है कि थोड़ा उल्टा होना चाहिए, because पहले हम उसको entry करें और फिर उसको ease out ज़्यादा better काम करेगा. So these are the things. Otherwise, in terms of EVs and all, things are improving. In fact, in today's Economic Times, I was reading in the morning, the EV vehicle percentage on roads have been increased, even in Rajasthan. So this is a good point. And then subsidies have been given to the EV charging stations. So that is good, but people are not too much aware. जब तक use में नहीं होगा, तब तक उस चीज को implement करने के लिए उसका costing नहीं निकलेगा. So उसके लिए मुझे लगता है awareness बहुत जरूरी है, वो होनी चाहिए. Highway king अगर आप देखेंगे तो almost all the highway kings on Delhi, Jaipur, in fact 70% they are having EV charging station. लोगों को दिखते भी नहीं है वहाँ पे, वो ऐसा लगता है कि ये क्या बन गया है, because people don't look at it, but things are improving. Private sector में थोड़ा सा अभी उसमें प्रॉब्लम है. अगर कोई छोटा स्टार्टअप उस चीज को करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट इज हाई, एंड देन उसका जो ROI है वो थोड़ा लेट आएगा, बट इट विल कम. सो हैंड टू हैंड चलेगा. थोड़ा गवर्नमेंट को उस चीज में करना चाहिए, और इंडिविजुअली पीपल शुड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग देयर EVs ऑन हाईवेज. वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है अभी तक, जिसके कारण वो ROI का थोड़ा इशू है. बट वेरी गुड पॉइंट्स दैट यू हैव मेंशन. आई रियली appreciate all those points that you have brought in. Thank you, Alok ji. Thank you, Parjat ji. I think these are very important points. Just final thoughts, very quick, 10 to 15 seconds from everyone. Regarding the challenges and opportunities in Rajasthan, especially in the tech, if anyone want to share any quick thoughts. So I think opportunity is that government of Rajasthan is one of the biggest buyers of IT. So can you buy from the SMEs? Can you buy from these startups?
and make the life easier as it is in some other states, right? You have certain things like somebody mentioned net metering, there could be medical records, there could be other things. But, buying from the startups and from the SMEs versus only the big five consulting firms, if you may, that is something which should be considered and it should be made easier for everybody. One of the challenge we face about the talent is the communication skills, which Parijat already shared that. So if our students focus on improving their communication, that will be very helpful to grow the IT industry in Jaipur. Thank you, Anil sir. So I'll talk about opportunity. Number one, Jaipur has a very good opportunity being having proximity to the NCR. Alternate बन सकता है अगर हम यहाँ पर अच्छी policies foster करें and Gurgaon and NCR का, because it has all capabilities. Like Anil sir mentioned that it is actually low seismic zone, while Delhi is a higher seismic zone from earthquakes in point of view. So एक वो opportunity है. Second, currently that the startups can avail is government has given, I don't know how many people know about it or not, but government has given approval to 600 crores budget in Jaipur, Jodhpur and Kota, okay, for the tech startups only. And number one, the priority for the government, government ka priority hai, but this is agri, tech, and the second one is the fintech. Fintech, I'm not sure, again this is in the list, but agri-tech is in the list. So tech overall, I would say, people should grab this opportunity. They should inquire about it. They can go to the DOIT, and this is another opportunity. Yeah, so rest, I guess we discussed so many other things, so no need to mention those points, yeah. Thank you, sir. So I think Rajasthan के बारे में in terms of infrastructure, skill development, opportunities, सभी का almost बात हो गया. तो I think we all have to work together as a academic or enterprises and the ecosystem. If you can work together, then we will be very soon will be in the tier 1 city in terms of infrastructure and skill development, not भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, infrastructure बहुत अच्छा होना चाहिए. Ideally, this is very important, and so that we can leverage the entire ecosystem. Thank you, Parijat ji. Thank you, Anil ji. Thank you, Alok, for all of your insights. Thank you so much, and thank you, everyone. I'd also like to thank all our panelists for their time and a great session. I'd like to call upon Tapan Kumar sir, Additional Director, Department of Information Technology and Communication, to come on the stage and facilitate our panelists. Just 1 minute. I think government के बारे में बहुत कुछ कहा गया. And I just want to, I am Tapan Kumar, Additional Director, Department of IT. And I am the OIC of Techno Hub. Just आपके adjacent जो है, Techno Hub में startup hub है, Rajasthan. We have many incubators. जैसे Parijat ji said, कि we have a policy. Government startups को nomination basis पे 1 CR तक के orders दे सकती है. मतलब that is the government of Rajasthan has done. जो भामाशाह data center है, this is Asia's first data center tier 1 का, जो किसी भी state government own करती है. Techno Hub जो है वो T Hub के बाद इंडिया का largest startup ecosystem का hub है ना. और जैसे आलोक जी was saying कि जो grants है, government grant देती है to startups, it has been increased from 5 lakh earlier to 60 lakhs. 60 lakhs तक grant मिल सकती है, and government can support a startup up to 5 CR. हमारा एक innovation award मिलता है जो हर साल मिलता है, उसका highest award is 5 CR. So government is doing everything for the people. मेरा request ये रहेगा आप लोगों से
कि फंक्शन के बाद जब भी आप फ्री हो यू कैन विजिट टेक्नो हब एनी टाइम. ठीक है, थैंक यू. Guys, let's clap for our esteemed panelists once again. Now, after this session, we'll starting the Rajasthan Bharat Award ceremony, where we'll be felicitating 21 to 25 legends of Rajasthan IT. They have joined us here and they'll be shortly here. So I request the audience to please wait for them, and we'll be looking forward to an excellent and amazing award ceremony. Has been pivotal in promoting IT across Rajasthan, emphasizing the integration of Hindi in digital domains and fostering innovation and education in the IT sector. Today, we honor the luminaries whose contributions have illuminated the path of progress in the IT landscape of Rajasthan. In our midst are the stalwarts of IT industry, whose endeavors have not only propelled the sector forward, but have also nurtured the next generation of IT professionals. Their achievements span across various channels, including software development, AI, cybersecurity, IT infrastructure, digital innovation, and reflecting the dynamic spirit of Rajasthan's IT sector. We extend a heartfelt gratitude to visionary like Dr. Ajay Data for enriching our ceremony with the innovative idea of a Hindi email ID for each awardee, furthering our mission of promoting Hindi in the IT realm. We also like to give a special mention to Mr. Dheeraj Vijayvargiya of Prem Info Solutions and all our sponsors and exhibitors, all those who have made this event possible through their unwavering support and dedication. I'd like to call upon Dr. Tarun Tan, CEO and Chief Editor of IT Voice, to address the gathering. जय हिंद, जय भारत। और डॉट भारत को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा हमें माध्यम भी मिला, और डॉट भारत के कारण मेरे को एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें आई। मैं डॉक्टर तरुण तार, CEO IT वॉइस, अध्यक्ष डीटो, एक हमारी NGO है जिसको राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से हमने 2011 में किया था रजिस्टर्ड, और ये सिर्फ IT को अवेयर करने के लिए काम कर रही है, फ्री एजुकेशन और लोगों को जोड़ने का काम करती है पूर्ण सेक्टर में। आज मैं सबसे पहले मंच पे आसीन हमारे UN डॉक्टर DP शर्मा का, कमिश्नर सर इंद्रजीत सर का, स्पीकर सर वासुदेव देवानी जी का, और हमारे जो कहूँगा कि इस इवेंट के अंदर मेन स्पॉन्सर जी टीम के राजीव कपूर जी का, और हमारे बीच में खुशी की बात है कि जनरल हमारे अनुज माथुर जी हमारे बीच में है। तो इन सब के साथ साथ मैं आप सब यहाँ पधारे, हमारे छोटे से अनुरोध पे हमने कोशिश की कि क्यों ना IT को हम राजस्थान में वापस से परचम लहराएं, यहाँ का जो पलायन हो रहा है उसको रोकें, और यहाँ से जो बाहर जो जाके जिन्होंने IT में दिग्गजता नाम कमाया है उसको एक बार इस धरती पे बुलाएं। हमने कई कोशिश करी, और हमारी एक छोटी सी कोशिश के अंदर ही, पहली कोशिश के अंदर हम सफल हुए, और हम यहाँ पे 21 जने को राजस्थान रत्न डॉट भारत के नाम से सम्मान करने का भी अवसर मिला। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका जिन्होंने IT के क्षेत्र में राजस्थान का नाम ऊंचा किया। मेरे को बहुत खुशी है कि एक कॉल पे चेन्नई से भी हमारे पास में है, मुंबई से हमारे पास में है, बेंगलोर से हमारे पास में है,
ऐसे ऐसे दिग्गज जिनके बारे में आपको आगे ब्रीफ मत दीजिएगा कि ये टाइम भी शॉर्ट है, ज्यादा बोलने के बजाय मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो हैं स्पीकर, कमिश्नर और जो डीपी शर्मा सर, इनको भी हम अगर सुने तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं मंच पे सबसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ 2-2, 3-3 मिनट का अपन बाइट दें, क्योंकि सबको जल्दी होगी और अब शाम को सबको फ्लाइट में भी जाना है कहीं को, तो हम वर्कआउट करते हैं डीपी शर्मा सर से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सभी स्वजनों को प्रणाम करता हूं और इस भारत भूमि को भी प्रणाम करता हूं। ऑनरेबल विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, कमिश्नर IT खन्ना साहब, ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, and main sponsor, industrial and academic fraternity people, and a special Dr. Tarun Tran Saab, Dr. Ajay Datta Saab, and one of the industrial legend, Ian Bhardwaj Saab. It's a matter of great pride and privilege for me to be the part of this wonderful event here in this theatre. As you know, IT is playing a vital role to transforming each and everything towards the developed nation. And our Honorable Prime Minister of India is trying to make the country power in the digital technologies. In this effort of .Bharat and Rajasthan Association of the IT. If I am forgetting, please correct me. And we all are trying to make our efforts toward the transformation of the nation, toward the developed nation. And in order to align our efforts, such kind of the events are the main, the platform where the different discipline people come together in a Mahakumbh of this kind of IT Expo 2024 to join hands and to collaborate for computing and transformation of the country's industrial transformation. I have seen across the world that we are facing tremendous challenges, but IT is playing a vital role to transform them, to elevate them, to eradicate them. And in Rajasthan, our Honorable CM, Bhajanlal Sharma ji, also trying to give the IT to the very young hand, Mr. Indrajit ji. I think he is having the IT mindset and trying to play a vital role to support the IT mission of the nation. In this particular concern, I would like to only congratulate to the organizer, Dr. Tarun Tran Saab, one of the very senior fellow, Dr. Ajay Datta Saab, who started the Hindi domain names in Rajasthan. And he is also one of the catalysts of Internet Governance Forum of United Nations, initiated by United Nations under the Tunisia Agenda 2006. Once upon a time, I was the chair in Government of India. I didn't come physically, but I was online available here. So I will not take much time because I usually talk on the scholarly issues. Thank you very much for inviting me and giving this opportunity to interact with you all. And our Vidhan Sabha Adhyaksh, our legends of Rajasthan in their respective disciplines are here. We will listen to them. And we will try to motivate the young generation, because IT is young technology by the young people. And we have very, very powerful IT professionals sitting here. Mr. Aklay Sharma, Dr. Ashwini Sharma ji, who has worked a lot, and many others, our PM. Thank you very much. Thank you. I request DP Sharma ji
to felicitate our special chief guest, Mr. Indrajit Singh ji, Vasudev Devnani ji. DP Sharma sir has been playing a pivotal role in the IT space from Rajasthan. Sir has been the National Swachh Bharat Mission Ambassador appointed by Prime Minister Modi. I request Mr. Indrajit Singh ji to please address the audience. रीटो द्वारा आयोजित आज के इस राजस्थान रत्न सम्मान समारोह में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण और सामने विराजमान हमारे समस्त राजस्थान प्रदेशवासी और दूर दराज के कोनों से भी पधारे हुए हमारे आज के सम्मानित होने वाले गेस्ट, आप सभी का इस आयोजन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत में ही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ना केवल रीटो संस्थान द्वारा बल्कि IT वॉइस के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर आने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। माननीय अध्यक्ष महोदय खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और हमने देखा है कि समय समय पे IT इनेबलमेंट को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके उनकी तरफ से लगातार राजस्थान में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है उसके प्रयास किए जाते हैं। अभी भी अल्प समय में माननीय अध्यक्ष महोदय ने, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने शुरुआत कर दी है कि विधानसभा की IT इनेबलमेंट को आगे कैसे लेके जाया जा सकता है और अभी भी मुझे आदेश मिले हैं कि बहुत जल्द एक प्रेजेंटेशन माननीय अध्यक्ष महोदय रखवा रहे हैं और कैसे विधानसभा का ITकरण और किया जा सके उसका प्रयास होगा। आज का जो विषय है, मेरा मानना है कि IT वॉइस ने, रीटो ने बहुत ही एक अनुकरणीय पहल की है जिसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि ना केवल IT क्षेत्र से बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उन लोगों को भी एक छत के नीचे लाया जा सके ताकि IT के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मैं कुछ समय पहले जब यहाँ पहुँचा तो बहुत ऐसे साथी यहाँ पे पधारे हुए हैं जिन लोगों का बहुत रिच टेक्निकल एक्सपीरियंस है। उन लोगों ने ये भाव रखे सर कि उनकी तरफ से ये प्रयास है कि राजस्थान को वो वापस क्या दे सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, आइडियाज़ के माध्यम से हो। और हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं उनके दिल में राजस्थान लगातार बसता है, चाहे अमेरिका, यूरोप और भारतवर्ष में तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी पुकार के ऊपर पूरे राजस्थान वासी हमारे एक साथ एकजुट हो जाते हैं। हमने कोविड के समय पे भी देखा और मेरा मानना है कि आने वाले समय में भी इस चीज़ को देखेंगे। मैं कमिश्नर IT होने के नाते 2-3 बातें यहाँ पे जो इकट्ठ है उसको निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि अभी वोट ऑन अकाउंट राजस्थान का अभी पारित हुआ है। उसके अंदर जिस प्रकार की सोच के साथ राजस्थान आगे बढ़ना चाह रहा है, मेरा मानना है कि वो एक Tier 2 सिटी नहीं लेकिन एक Tier 1 सिटी के लेवल के कार्य जो है अपने हाथ में लिए हुए हैं। हाईटेक सिटी नाम से एक बहुत विशाल लेवल का एक प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है ताकि दिल्ली और जयपुर के बीच में हम लोग इस प्रकार की एक हाईटेक सिटी दे सकें अपने पूरे राजस्थान को, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और उसका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा IT के ऊपर हो। उसके साथ साथ तकरीबन पूरे रीजनल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए 1000 करोड़ की लागत से 4 एक्सेलरेटर्स बनेंगे। एक बीकानेर में बनेगा, एक भरतपुर में बनेगा, एक जयपुर में बनेगा, एक उदयपुर में बनेगा। इसी प्रकार से आप जब RIC में आ रहे होंगे आपने देखा होगा भामाशाह टेक्नो हब, डेटा सेंटर, ये सारी इस प्रकार की संसाधन हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा मानना है कि जिसकी प्रेजेंस राजकीय क्षेत्र में
पूरे भारतवर्ष में तो क्या पूरे एशिया में किसी जगह के ऊपर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वाला डेटा सेंटर आपको नहीं मिलेगा। और किस प्रकार से आईटी गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच रही है, उसका उदाहरण आपने अभी देखा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब 25 जनवरी की शाम को फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ राजस्थान जयपुर पधारे थे, तो हवा महल के बैकड्रॉप में जब वो चाय की चुस्की ले रहे थे तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट के साथ दिखाया कि किस प्रकार से हमारा डिजिटल पेमेंट्स नॉट ओनली अक्रॉस एशिया बट पूरे वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 पे चल रहे हैं। और मैं आप साथियों को बताना चाहूँगा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मैं डूंगरपुर में कलेक्टर था जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की नींव रखी थी। डूंगरपुर जैसे इलाके में तकरीबन 5 या 10% ही लोग ऐसे होते थे जिनके पास बैंक अकाउंट होता था। तो आज 10 साल के बाद हम देख रहे हैं कि उन सभी जिस प्रकार के फाउंडेशनल आइडियाज़ की एक नींव रखी हुई थी वो आज आपको साकार होती दिखती है कि जनधन के साथ, आधार के साथ और मोबाइल के साथ जो जैम ट्रिनिटी जिसका नाम है जनधन, आधार और मोबाइल। मोबाइल में भी डेटा रेट्स में आप जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे सस्ता मोबाइल जो है, मोबाइल रेट्स मिल रहे हैं, टेलीफोनी मिल रही है। तो जिस प्रकार से भारत सरकार और राजस्थान सरकार एक नीतिगत तरीके के साथ ठोस कदम लेते हुए आगे बढ़ रही है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को और यहाँ पे जितनी भी हमारी टीम बिराजी है, मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी DOIT विभाग राजस्थान कंधे से कंधा मिला के इस नए इनिशिएटिव को आगे लेके जाएगा। और आप लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई आप लोगों की तरफ से आइडिया हो, उसको अपने संज्ञान में लेते हुए हम लोग अपना भरसक प्रयास करेंगे कि IT को और आगे ऊंचाइयों पे राजस्थान में ले जाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your kind words, and definitely we'll take the Rajasthan IT landscape to the next level. I request Rajiv, sir, from GKIN to felicitate Commissioner of IT, Mr. Indrajit Singh. I like to audience to please keep clapping your hands as we have stalwarts of the IT industry amongst us, and we must definitely clap for them and encourage them. Now it's time to announce the much awaited list of Rajasthan Ratna awardees. I'd like to start by calling Mr. Ajay Data in the alphabetical order to come up on the stage and take his Rajasthan Ratna Bharat award. Ajay Data sir is the managing director of Data Group of Industry. He's a technology visionary and a serial entrepreneur. He's known for his innovation, advocacy in linguistic email, and also serves as digital transformation specialist. He also actively participates in the Premier Handball League in the edible oil sector, while concurrently acting as a mentor in many social forums. So all the awardees are getting an email ID in the Rajasthan.Bharat domain name that is valid with 10 GB of GB space for the next 10 years. Now we would be giving Rajasthan Ratan award to the actual Ratan of Rajasthan, DP Sharma ji, who is also on stage with us. The Rajasthan Ratan award does not go along if we do not felicitate DP Sharma sir at the forum.
The next awardee on our list is Mr. Akhilesh Sharma. Akhilesh Sharma, sir, is the founder and CEO of A3 Logics, a global service provider for IT consulting, offshoring, product engineering, and next generation professional services. Sir founded the company in 2003 and is now leading and steering the team built organizations serving globally. बाकी बैग में दे देना Next, I would like to call upon Mr. Anshuman Shastri ji. He is the Director of Center for Artificial Intelligence from Banasthali Vidyapith. Sir is a senior member of IEEE, an international officer and skilled in multiple additive manufacturing technique using low-cost household printers and state-of-art 3D printing machines. Sir is skilled in advanced design system, negotiation, C, C++, Tina and Turbo Pascal and many other IT languages. I'd like to request Mr. Ashwini Kumar Sharma to please line up so that we don't have a delay on our end and as we have a few limited time with our chief guest with us. Next on our list is Dr. Ashwini Kumar Sharma. Sir is a BE and MTech in Computer Science. Sir completed his PhD in e-governance. He has a professional experience of more than 39 years, which is a blend of R&D, industry administration, skilling, entrepreneurship, and academics. Sir's contribution has been an IT as Managing Director of Rajcom, now RISL, where he worked for more than 7 years as MD and supervised execution of multiple IT and e-governance projects like CSC, Rajasthan Swan, Rajasthan SDC, and many more. Next on our list is Mr. Atul Gaur, Board Member and Director of Cerex Technologies. Sir is a highly accomplished techno-commercial business leader with over 32 years of experience in IT, mobility, e-commerce, security, and cloud-based service industry. Sir has an extensive experience in working and building up the channel ecosystem since the early days of 90s. That is where organized distribution had started taking shape. On behalf of Mr. Akshay Hada, I'd like to call Sir's wife to come up on the stage and collect the ceremony. Akshay Hada, sir, is an MD at Symphonia and Graphicus with a robust skill that includes business development, team management, new business development, and construction and business planning and more. Akshay Hada, sir's insights have been contributing and valuable insights to our industry. Next on our list is Mr. Anil Agarwal, Managing Director, Now India. I'd like to request Anil Agarwal, sir, to please line up on the stage. After Mr. Anil Agarwal, the next on our list is Mr. Anuj Bharati, CEO of Sci Future. Sir is an accomplished professional with almost 25 years of experience in various cloud computing roles and diverse industries such as leadership,
IT services and consulting. Bootstrapped an IT business during graduation, and today, Sai features in formidable organization with over 3,500 professionals excelling in AI, ML, blockchain, cloud and BMP sectors. Next on our list is Mr. Balendu Sharma Dhadij. Balendu sir has been associated with Web Dunia and is recognized for his pioneering efforts in promoting Indian language on the internet. Sir's work has significantly contributed to the development of digital content in local languages, making technology more accessible to a wider audience in India. Next on our list is Mr. Bharat Goenka, founder of Tally Solutions Private Limited. On Bharat Goenka sir's behalf, we have Mr. Joyce Reyes, head of sales of Tally Solutions. Bharat Goenka sir is an Indian businessman from the Marwari heritage and the co-founder and managing director of Tally Solutions. Sir has received Padma Shri from the Government of India for his contribution in the field of trade and industry. I think all of us in the auditorium would have used Tally in some time of our life. Next on our list is Mr. Brijesh Agarwal, founder and CEO of India Mart. Sir holds, on Mr. Brijesh Agarwal's behalf, we have Mr. Amit from Brijesh Agarwal's team to collect the award. Brijesh Agarwal sir has held master degree in management science from University of Lucknow and a postgraduate diploma in business management. India Mart is a commercial B2B platform that has changed the B2B e-commerce landscape. Next on our list is Mr. Manu Agarwal, founder and CEO of Naptol. Sir has started Naptol. Before joining this company, Sir started and worked for companies such as A&M Soft Technologies, Design Expo Network, Wafer Scale Integration and others. Sir holds an engineering degree from IIT Kanpur and master's degree from University of Minnesota. Naptol changed the TV advertisement landscape. After Mr. Manu Agarwal, we have Munesh Jadon sir, founder and CEO of ZNet amongst us. I'd like to request Mr. Munesh sir to please line up for the Rajasthan Ratna Bharat Award. Next on our list is Mr. Pankaj Sancheti, Director of Component Tech Solutions. Sir has an experienced owner of demonstrator of history in working in the computer hardware industry. Sir is skilled in negotiation, sales, business, development, computer hardware and telecommunication. After Mr. Pankaj Sancheti, we have Mr. Parijat Agarwal, co-founder and CEO of MetaCube Software. I request the audience to please keep clapping for our Rajasthan Ratna Bharat awardees. Next on our list is Mr. Pavan Godara, CEO of Dogma Soft Limited. Pavan sir is a result-driven Chief Executive Officer with over 12 years of expertise in the fields of IT, banking, financial and government services. I request Dr. P.M. Bharadwaj sir
who is the next Rajasthan Bharat awardee, to please join us on the stage. Dr. P.M. Bharadwaj is the founder and president of Bharadwaj Foundation. Sir is a national level motivational and management speaker and has been ex-CMD and MD of 4 public sector units. Bharadwaj sir is a graduate from MNIT Allahabad, having 45 years of industry experience. Mr. Bharadwaj sir has played diverse roles in the various public sector undertakings. Sir's unique management style and miraculous effect have taken organizations to great effect. I request Dr. P.N. Bharadwaj sir to take 1 minute of his time and request to please sir to address the audience. जय भारत। देखिए पूरा हॉल भरा हुआ है, जोर से आवाज आनी चाहिए। इतने यूथ बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं। जय भारत। बहुत ज़्यादा नमन करता हूँ मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष साहब को, देवरानी साहब को, इंजीत साहब को, डॉक्टर डीपी शर्मा साहब। एक फ़ोन के ऊपर न्यूयॉर्क से बोले भारद्वाज साहब, मैंने जब और टाक साहब ने फ़ोन किया, टाक साहब किधर हैं, जरा इधर आ जाओ, तब इन्होंने एक फ़ोन पे कहा कि आई विल लीव ऑल द प्रोग्राम्स इन यूएन एंड कम टू इंडिया बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर नेशन। जोरदार ताली डीपी शर्मा जी के लिए। मेजर साहब और जो हमारे आईटी के दिग्गज यहाँ बैठे हैं, जनरल साहब और आईटी के दिग्गज और सब गुरुजन। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा टाइम भी 1 ही मिनट का है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा तो मुझे सुन लेना काइंडली कि सबसे बड़े गुरुजन है। राजा कहे कि मैं बड़ा तो हाथी पे क्यों चढ़ा, हाथी कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी, शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, और शिव जी कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ा। गुरुजन जिनको सम्मान मिला है, गुरुजन जो यहाँ बैठे, सबके लिए जोरदार ताली जरा। क्यों मैंने ये कहा भारत को विश्व गुरु बनाने का, मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा है। अब तो सरकार भी ऐसे आ गई, माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, माहौल बदला हुआ है। अभी नहीं तो होगा नहीं, बाद में ध्यान रख लेना। मैं चाहता हूं कि हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाए, और यहूदी और भारतीयों के अलावा इसको मतलब भारतीय ही है नंबर 1 पे, जो है यहूदी भी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वही भारत के भारतीयों का ये एक पार्ट है। तो हम लोगों को तो जो है विश्व गुरु बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सवाल है, जब मुझे तरुण जी ने कहा ये इतना जो है जोर लगा रहे हैं इतनी एनर्जी से, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए बुजुर्ग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे अगर, तो देखिए थ्योरी में जितना टाइम लगता है उतना ही जल्दी जब बच्चे आए, जब इन्होंने मेरे से कहा कि आप जो है इंटरफेसिंग इंडस्ट्री कनेक्ट का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, 41 प्रोग्राम नेशन में कर चुके हैं, जिसमें माननीय मंत्री बहुत सारे लोग आए हैं, गवर्नर साहब भी आए थे राजस्थान के, और अलग अलग सेशंस में। तो इन्होंने कहा एक बार मुझे आप हेल्प करें, मैंने कहा बिल्कुल आई एम विद यू। और मुझे खुशी है जितने कुलपतियों को कहा और बच्चों से कहा, इस हॉल में इनॉग्रेशन, आज तो संडे पड़ गया, इनॉग्रेशन के दिन 750 की कैपेसिटी वाले हॉल के बाहर 500 बच्चे खड़े हुए थे। ऐसे जो ये लोग हैं, इनको एकदम, इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम हरदम जो है होने चाहिए। आप ये देखो, पहले से बस 1 मिनट और, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 3 ही ब्रांचेस थी, बाद में आईटी ब्रांच आई, और अब तो आईटी इंडस्ट्री बन गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, दुनिया भर की चीजें। मैं ये फील करता हूं जो हमारे टाइम जो कोर ब्रांचेस थी, उन ब्रांचों के रिजल्ट नहीं आ पाएंगे अगर हमारे बच्चों ने न्यू टेक्नोलॉजी लाइक आईटी को अडॉप्ट नहीं किया। बहुत सारा स्कोप है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा, एज ए AICT मेंबर, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कई कमेटीज में मेंबर, नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो 3 ब्रांच है वो बेकार है, सभी ब्रांच इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आईटी के बगैर एक भी ब्रांच जो है वो काम नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन में जब मैं फॉरेन में गया, मैंने देखा कि जितने भी वहां लोग हैं उनमें इतनी अकल नहीं दिखी कि वो जो है हमारे ऊपर राज करें या हम उनके पिछलग्गू बने। जितने यूथ यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं जोड़ लगाओ, और इस देश को सुपर पावर आपको बनाना है। हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहिए। सोने की चिड़िया ऐसा एक ही देश था जो कि विश्व गुरु के साथ साथ सोने की चिड़िया भी था, नहीं तो लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं आती, पर हमारे बुजुर्गों में वो अकल थी कि सब एक साथ आया। थैंक यू वेरी मच। सॉरी
मैंने आपने कहा था 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए बोला है। मुझे लगता है आप मेरी चीज़ को, थैंक यू। Next on our list is Mr. Bahul Chandra, founder of Dot Squares Company. I'd like to request the audience to please clap your hands for Mr. Bahul Chandra. Bahul sir has a huge amount of experience in managing offshore team, which has previously proved immensely helpful. Next, I would like to request Mr. Rajiv Gupta from Computex to please line up on the stage. Rajiv sir has been associated with Computex for a long time now, and sir has made significant contribution to the IT landscape, focusing on technology solutions that enhance business efficiency and innovation, reflecting a commitment to excellence in the fast-evolving tech environment. Next on our list is Mr. Sandeep Doshi, founder and director of Zebronics. Sandeep sir is based in Chennai, Tamil Nadu, and is director of Zebronics India Private Limited. Sir has a robust skill set that includes leadership, product marketing, solution selling, channel sales, and more. Next on our list is Mr. Sharat Kaviraj, IPS, Rajasthan Police. As an IPS officer in the Rajasthan Police, Sharat sir has integrated cutting-edge technology and IT solution into law enforcement and public safety measures, showcasing an exemplary fusion of technology and governance for societal benefit. Next on our list is Mr. S.K. Surana. S.K. Surana sir is the Managing Director and CEO of Compucom Software Limited. It is listed in the National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange. S.K. Surana sir is also the Editor-in-Chief and Satellite Division of Jan TV. Next, I would like to call Mr. Sushil Sharma, founder and CEO of Marwadi Catalyst, to please join us on the stage. Sushil sir unfortunately was unable to join us for this session. Each awardee on the panel has a story of perseverance, innovation, and success. From revolutionizing business accounting with groundbreaking software to leading the charge in cybersecurity, and from pioneering digital commerce to fostering technology, their contributions are a beacon of inspiration to all. I request Mr. Rajiv Kapoor sir from GKIN to please address the audience. आदरणीय सभापति महोदय, मंच में बैठे सारे दिग्गज और आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं इस आईटी एक्सपो पे। आईटी एज एन एक्रोनिम बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। आईटी से हम इनकम टैक्स जानते हैं, सर हमारे बीच मौजूद हैं, और आईटी से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड को जानते हैं, और दोनों ही बहुत ही पावरफुल वर्ड हैं हमारे लिए। इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी काफ़ी विशेषताएं हैं। इनकम टैक्स जो देश को एम्पावर करता है, देश को आगे लेके जाता है। फ्लाईओवर्स, बैंकिंग, अदर सॉल्यूशंस सेनाओं को सशक्त करता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देशवासियों को एम्पावर करती है। हमारे लाइफस्टाइल, हमारे पढ़ाई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। आप स्कूल में जाएं, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बच्चे इतने एनेबल हो चुके हैं दैट उनको अब किताबों से आगे सोच जो डेवलप हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ किताबों तक सोच सीमित नहीं रह गई है, बच्चों के पास बहुत कुछ है करने को। और यही हमारा एज अ कंपनी, एज अ पर्सन मेरा नारा है कि फ्यूचर लीडर्स अगर हमने बनाने हैं, आज हमारे पास अगर एक सचिन तेंदुलकर साहब हैं या धोनी साहब हैं या चोपड़ा साहब हैं,
हमें फ्यूचर में अगर 100 बनाने हैं तो आज हमें राइट बीज बोने पड़ेंगे अपने एजुकेशन सेक्टर में, खेल में, बैंकिंग में, एविएशन में, और मेरे ख्याल से सभी राज्य सरकार और मोदी जी की जो सरकार आई है सेंटर में, उनका यही उद्देश्य है कि किस तरह से हम आम जनता को एम्पावर करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इंफॉर्मेशन पहले ऑयल कहलाया जाता था, आज इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। 1 क्लिक पे आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं चैलेंज द स्टेटस को, ये क्यों नहीं वो क्यों, एंड बेस्ट कंक्लूजन आप अपने लिए निकाल सकते हैं। जीकेन के बारे में बताएं तो जीकेन भी इस देश का होम ग्रोन ब्रांड है। 35 सालों से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स के लिए फर्नीचर और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में मेरा इन सभी से डिस्कशन होता है, जहां पे हमारे कस्टमर्स जो कि वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, डीन्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कि किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को फर्नीचर और टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, उनकी कंपनी भी और जो उनके सॉल्यूशंस भी। तो यही मेरा कई लोगों से चर्चा हुआ है इस शो के माध्यम से। थैंक्स तरुण जी, जो आपने इतना बढ़िया शो किया। राजस्थान अपॉर्चुनिटीज का हब है, टैलेंट का हब है, एजुकेशन कैपिटल कहलाया जाता है इस देश का। तो हमें अवसर मिला एज ए कंपनी, एज एन इंडिविजुअल, कि मैं इतने सारे लोगों से मिला, उनके चैलेंजेस जाने, गैप जाने। वापस कंपनी में जाकर के हम अपने R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे और इस प्रदेश और इस देश के लिए हम वो सॉल्यूशंस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत। Last 2 awards for the day. We request Mr. Major General Anuj Mathur to take award on behalf of Mr. C.P. Gurnani, ex-MD of Tech Mahindra. Sir has been friends with Mr. C.P. Gurnani for a long time and has agreed to grace the occasion on behalf of Mr. C.P. Gurnani, sir. The final name on the list is Mr. Suresh Pansari, Director of Rashi Peripherals. Suresh sir has been a promoter and Vice Chairman and whole-time Director of Rashi's Peripheral. On his behalf, I request Mr. Satish Gupta sir to take the Rajasthan Ratan Bharat Award. I request Mr. Vasudev Devrani, our chief guest of the day, to please address the audience. रीटो के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री डीपी शर्मा जी, हमारे कमिश्नर इंद्रजीत सिंह जी, राजीव कपूर जी, मेजर जनरल अनुज माथुर जी और सभी इस सभागार में विराजमान अपने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिनको सम्मान हुआ तथा बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि भारत जिस तरह से आईटी क्षेत्र में बढ़ रहा है, अभी उसमें राजस्थान में भी बहुत बड़ा स्कोप है। यदि हम लोग राजस्थान को भी अपना कर्म क्षेत्र चुनेंगे तो आपको बहुत अधिक यहाँ पे स्थान भी मिलेगा, मार्केट भी मिलेगा और नॉलेज लेने वाले भी लोग मिलेंगे। और जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में मुझे ध्यान है 2014 का उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त और घोटालों को समाप्त करते हुए हम शासन दें।
और उसमें डिजिटल भारत की कल्पना की गई। और उस कल्पना में हम देख रहे हैं कि सीधा आज लाभार्थी के साथ भी संवाद हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, विद्यार्थियों के खातों में सीधा उनकी स्कॉलरशिप जा रही है, लोगों के जी में सीधा उनके पास पैसा जा रहा है। इसके कारण से निश्चित रूप से कई जो करप्शन चाहते थे उनको बड़ी तकलीफें भी होने लगी हैं। इसलिए मोदी जी के शासन में हम पारदर्शिता और जिम्मेदारी वाले शासन के लिए उसमें आईटी विशेषज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने इस भारत को पारदर्शितापूर्ण शासन देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर योजना की जानकारी ऑनलाइन है, हर प्रक्रिया ऑनलाइन है, सब्सिडी भी ऑनलाइन सीधे खाते में जा रही है, किसान को भी प्रत्येक योजना का लाभ हम सीधा मिलने लगा है, और प्रत्येक लाभार्थी के सीधे खाते में जो लाभ मिला है उससे निश्चित रूप से जो डिजिटल भारत है वह हमारे 21वीं शताब्दी का भारत है। जब मैं बहुत पहले सुनता था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, हमें बड़ा आश्चर्य लगता था कैसे होगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये सत्य और वास्तविक भी होने लगा है। और अभी मेरे कह रहे थे साथी कि भारत विश्व गुरु था नहीं, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और आने वाले समय में भी भारत की बहुत बड़ी मुख्य भूमिका भी रहने वाली है। अर्थव्यवस्था को तो हम देख ही रहे हैं कि भारत 11वें स्थान पर था, वहां से आकर के हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। शायद आगामी वर्ष तक हम 4थे स्थान पर पहुंचेंगे और निकट के 3-4 वर्षों में ये तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। और उसमें आप सबका बहुत सहभाग रहा है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्पना की है कि 2047 के अंदर भारत एक विकसित देश बनेगा। अभी तक तो विकासशील देश की बातें हम लोग सुना करते थे, विकसित राष्ट्र की शायद पहले उनके मुखारबिंद से ही ये बात आई है। और मुझे लगता है कि आप और हम सभी के सहभागी से शायद हम अपने आंखों से एक विकसित भारत के भी दर्शन कर सकेंगे, हम उसके भागीदार होंगे। और इस परिस्थितियों में जो 4-5 चीजें चाहिए वो इच्छा इस समय देश के नेतृत्व के पास है। दृढ़ नीति हो, दृढ़ विदेश नीति हो, दृढ़ राजनीति हो और इच्छा शक्ति हो। जब तक इन चारों चीजों का समावेश होगा तो मैं समझता हूं हम आगे बढ़ेंगे। और इस समय भारत सूचना प्रौद्योगिकी आईटी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, जिसमें हमारे रहने, काम करने और बातचीत करने के तरीकों में भी एक क्रांतिकारी बदलाव सा दिखाई दे रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो शायद अब बहुत अधिक शायद सक्रियता से और हमारे स्वभाव में भी आता जा रहा है। और उस बाद ब्लॉकचेन से लेकर के क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक आईटी में हालिया विकास उद्योगों के बहुत अधिक बदल रहा है और भविष्य का आकार ले रहा है। यह लेख सूचना प्रौद्योगिकी के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विकास विभिन्न क्षेत्रों में आए प्रभाव की पड़ताल करता है। इस समय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया मिशन में सहयोग कर रहे हैं और भारत का बच्चा बच्चा इस मिशन का भागीदार है। और आज हम फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस डिजिटल इंडिया की घोषित भूमिकाओं में से एक हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत अलग देशों के साथ मिलकर के आईटी सेक्टर को मजबूत करने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ देखा कोई विदेशों के भी लोग हैं, अभी आप अमेरिका से आए हैं, तो बाकी भी कुछ लोग हैं। तो मैं समझता सब लोग मिलकर के इस भारत को आज आगे बढ़ाएं और भारत से भारत 6G और अमेरिका का नेक्स्ट जी अलायंस सार्वजनिक निजी अनुसंधान का सह नेतृत्व करेंगे। इसमें आप सभी की भी भूमिका होगी। हमारा इसका लक्ष्य है लागत कम करना, सुरक्षा बढ़ाना और दूर संचार नेटवर्क के लचीलापन में सुधार करना है। इन तीनों क्षेत्रों में हमने यदि काम किया तो यूएस जो इंडिया कमर्शियल डायलॉग है, क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें यूएस इंडिया इनिशिएटिव का हम समर्थन करते हुए दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए एक इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च करेंगे, जिसका नव भारत के निर्माण की जो एक ठोस नींव होगा
उसका अपने को लाभ मिलेगा। हम नई ऊंचाई लेकर के भी जाएंगे। और फाइबर ऑप्टिक्स इन्वेस्टमेंट आज भारत में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कोलंबिया, दक्षिण कैरोलिना के पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माण इकाई के निर्माण में भी $100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत से ऑप्टिकल फाइबर का वार्षिक निर्यात में $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक सुविधा मिलने जा रही है। आज का युग पूर्णतया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर टिका हुआ है। हम भारत कई देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मैं बहुत अधिक न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि मानव बुद्धि की जो आवश्यकता है उसे स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, ग्राहक सेवा और स्वायत्त वाहनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई का लाभ उठाया जा रहा है। मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण करते हैं, जिससे संगठनों को डाटा संचालित निर्णय लेने, उत्पादकता बढ़ाने और उपयोगकर्ता अनुभवों का बेहतर बनाने में सक्षम बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कहें तो गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी की अपन इंफ्राबीम एवेन्यूज लिमिटेड ने वित्तीय और वाणिज्य क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने और प्रमाणीकरण जोखिम की पहचान में नए आयाम स्थापित किए। आजकल साइबर क्राइम और ठगी के मुद्दे कई प्रकार के प्रकरण होने लगे हैं। उस सबको आपके सहयोग से ऐसा कोई तंत्र डेवलप करना होगा आईटी के माध्यम से, जिससे कोई भी व्यक्ति इसका जो दुष्परिणाम कुछ है वह भी रुके और इसके जो लाभ हैं उसको हम पूरा तरह ले सकें। आज आवश्यकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो मूल रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के लिए विकसित की गई थी, लेकिन हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का किस तरह से दुष्परिणाम भी अपने बीच में आए और डिजिटल मुद्राओं के आगे विकसित हुई। कई उद्योगों में इसका प्रयोग भी किया गया और एक डिसेंट्रलाइज और छेड़छाड़ रोधी डिजिटल बही खाता है जो लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करता है। इसमें हम सबको आगे बढ़ाना होगा और हमारी धोखाधड़ी को कम करने और विश्वास बढ़ाने की जो क्षमता है उसको भी ठीक करना होगा। और उदाहरण के रूप में यदि कहूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक का भी आपके पास, जिसका उपयोग व्यापार वित्त लेन देन में है, जहाँ ये आयातकों और निर्यातकों और अन्य लोगों के बीच व्यापार वित्त पोषण लेन देन के तेज करने, सुरक्षित रखने और स्पष्ट रूप के लिए इंटरप्राइज को लाभ उठाता है। और इस सबको हम देखते हुए हम एमएसएमई के लिए भी ये सब वरदान हो सकता है। इसलिए कंपनियों को आगे बढ़ाएं और क्लाउड कंप्यूटिंग ने जो कंप्यूटिंग संसाधनों और सेवाओं तक स्केलेबल और ऑन डिमांड पहुंच प्रदान करने आईटी परिदृश्य को आज बदल दिया है। हम इसको आगे बढ़ें। आज व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के कई उदाहरण हैं, जिसको बहुत ज़्यादा विस्तार से न कहते मैं समझता आप अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, इसलिए बहुत अधिक इन चीज़ों की चर्चा न करते हुए एक बात का आग्रह करूंगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता है। उन उपायों के लिए हम आगे बढ़ें और आईटी के हाल ही में विकासों में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो नवीन दृष्टिकोण में शामिल है, इसमें उन्नत एन्क्रिप्शन, एल्गोरिथम, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, व्यवहार आधारित विसंगति का पता लगाना और सक्रिय खतरे की खुफिया प्रणाली को अपनाना शामिल है। जैसे जैसे साइबर खतरे अधिक परीक्षित होते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, संवेदनशील डाटा और व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के लिए भी साइबर सुरक्षा का विकास जारी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि राजस्थान, यहाँ का व्यक्ति इंटेलिजेंट भी है और यहाँ का व्यक्ति मेहनती भी है, यहाँ का व्यक्ति समझदार भी है। आप देश के कोने कोने से आए हैं, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप राजस्थान आएँ। और मैं तो क्यों अजमेर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए आप अजमेर भी आएँ। अभी हम सोचते हैं कि आईटी के क्षेत्र में कभी हम बेंगलोर, हैदराबाद इनके केवल नाम सुनते हैं। आइए हम राजस्थान में भी जयपुर, अजमेर इत्यादि को यहाँ का बेंगलोर, हैदराबाद बनाएं। आप आमंत्रित हैं और जो कुछ भी आपको यहाँ की आवश्यकताएं होंगी, जो कुछ भी सहयोग होगा सरकार का, वो हम निश्चित रूप से आपको देने का प्रयास करेंगे। कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं कहता हूँ इनको भी निश्चित रूप से हम कहते हैं कि आप सबको साथ लेकर के यहाँ पे, क्यों उद्योग राजस्थान में इसलिए कई बार नहीं आते थे कि यहाँ पे जो सारी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाया करते थे, इसलिए कई लोग यहाँ आकर के भी वापस लौट गए। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। यहाँ की डबल इंजन सरकार आपका सहयोग करने को तैयार है। आइए
हम राजस्थान का नाम रोशन करें और आज जिनको राजस्थान रत्न मिला है धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए भारत रत्न की ओर आगे बढ़ें। आपको शुभकामनाएं देता हुआ, बधाई देता हुआ और यहाँ पे आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार हमारे स्पीकर महोदय जी का। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में और ये दिखाया कि हमारी सरकार सिर्फ सरकार नहीं, उसको आईटी की, टेक्नोलॉजी की, सबकी पूरी नॉलेज है। अब इसी के साथ हम अपने जो अतिथिगण का सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर आशुतोष पंत जी से मैं निवेदन करूंगा, जो इंडियन ऑयल के CSR के डायरेक्टर हैं, वो मंच पर आएँ। और एक हमारे रीटो के जो कमेटी के सदस्य हैं सुरेंद्र कटोर जी को भी कहूँगा कि वो हमारे स्पीकर महोदय का सम्मान करने के लिए आप मंच पर आएँ। इसके तुरंत बाद में हम कमिश्नर जी का सम्मान और फिर ग्रुप फोटो करेंगे। आशुतोष पंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कमिश्नर सर DOIT के उनका सम्मान करें, क्योंकि इनके बिना आईटी संभव नहीं है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि लोग बाग कहते हैं कि राजस्थान धरती धोरा की। आज हम यहां से आगाज करते हैं कि राजस्थान धरती धोरा की के साथ में राजस्थान धरती रत्नों की, आईटी के रत्नों की। और अब मैं सभी अवार्डी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। और आशुतोष पंत सर, आप भी अगर मंच पर आए, हम सब ग्रुप फोटो करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि नीचे आईटी की एक पूरी एग्जीबिशन लगी है, अगर आप उसको और देखेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आगे हम और अच्छा कार्य करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सभी अवार्डी से मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आए, एक अच्छी हम ग्रुप फोटो करें। बहुत इसी के साथ मैं मीडिया का, मेरी टीम का, हमारे प्रायोजकों का, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे 2 बेटों का, मेरे बेटों के साथ उनके मित्रों का, कॉलेजों के वॉलंटियर्स का, जिन्होंने इस छोटे से फंक्शन को एक बड़ा फंक्शन का रूप दिया, एक बड़ा इसको आयोजन बनाया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया जितने बच्चे आए आगे खड़े, लेकिन तेजी से आइए प्लीज। जो भी फैकल्टी और बच्चे हैं यहाँ खड़े हो जाए, एक फोटो नीचे आ जाए, लेकिन लेट नहीं करें। विधानसभा अध्यक्ष